लिया था? यस वो सर मैं देखें ना, मेरे खिलाफ एक FIR। ये कानून की अदालत है, अगर कोई कानूनी बात करना चाहें तो कर दीजिए, हकीकतें हमें बताते रहिएगा, लिख कर दे दीजिए। आपको फाइल करना है, आज दिन तक आपने कुछ फाइल किया है? सर हकीकत तो यही है कि भाई हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सर ये आपने खुद ही ऑर्डर पास किया होना योर लॉर्डशिप। माशाल्लाह जनाब, उसके लिए आपको कई दफा कहा ना कि रिपोर्ट कॉल कर ली है कल इनसे, जो भी FIR है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कॉल की है इनसे। सर ये जजमेंट है, मैं अगर आप प्लीज आप हमें जजमेंट ना बताइए सर, ये एक दफा रिपोर्ट तो फाइल करने दीजिए अटॉर्नी जनरल को, जब वो फाइल कर देंगे उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी, फिर हम आगे जा सकते हैं ना। जिनकी FIR जो कंप्लेनेंट है उनको कन्फ्रंट होगी ना वो रिपोर्ट, फिर वो बताएंगे कि उसमें इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और आगे मामला कहाँ पे गया, कोर्ट में किस स्टेज पे है, चालान फाइल हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये तो ये बताएंगे ना पहले। लेट हिम फाइल द रिपोर्ट फर्स्ट ऑन दैट स्पेसिफिक FIR। ठीक है सर, लेट देम फाइल द If I may, as a matter of procedure now, just something that I wish to draw your attention to. On 20th of August, a two-member bench headed by my Lord the Chief Justice passed the order. Now, after that order, 1 second, I just want to clarify something. कोई filings हुई हैं आज कल? हाँ सर, वो फाइलिंग इस वजह से नहीं हो सकी, हमें अभी तक वो लिस्ट ही नहीं देगी कि किन मेंबर्स के खिलाफ, किन जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमात हैं। प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, nobody wants to do their work anymore. Please read the Supreme Court Practice and Procedure Act. सर हमने CMA बना के, अगर आप बनाते रहे, हम पता नहीं अब क्या करें, हमारे पास इनको दीजिए, आप ठहर जाइए प्लीज। अटॉर्नी जनरल, my Lord, I don't know what's we yesterday were very careful not to pass an order. Why? Because we were very cognizant of the Supreme Court Practice and Procedure Act. Just go through section कौन सा है इसका? Okay, section 3. Read the section 3. Exercise of original jurisdiction by the nobody wants to have any concern with the law. I'm surprised. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Now we are cognizant of it. This is the law of Pakistan. Now somebody comes and gives a piece of paper here. I mean, we would love to do it. We can't do it. That's why we took an undertaking from you. I did not pass an order against you. I mean, if people can't understand this, I don't know. It's very clear cut. And this law has just been telecast to the whole of Pakistan. Now everybody should know about its provisions. Now if someone doesn't want to do it, I mean, and now please, it's not very, नहीं एक सेकेंड, एक और बात भी बता दें आपको, अभी इसी महीने हमने एक ऑर्डर पास किया है, ये आप देख, ये इनको दे दें, उनको दें, SMG वाले। अभी एक बेल मैटर में एक इशू रेज हुआ था, My Lord, प्लीज रीड पैराग्राफ 4 का एंड से पढ़ दें। जी, we cannot ignore the above document, which had been produced before us in court, which purports to be a license of a submachine gun, SMG, which is a prohibited bore weapon. Notifications are also issued by the government exempting the requirement of obtaining licenses or permitting licenses for prohibited bore weapons to certain categories of persons, including chief justices, judges, ministers, parliamentarians, as mentioned in Schedule 1 of the Arms Rules 1924. Next para, the above has raised the following questions. 1. Under what legal authority had the Deputy Inspector General of Police, Mardan Region 1, Mardan, issued the said document which purports to be a license to carry an SMG, which is a prohibited bore weapon? 2. Whether licenses of SMG and other prohibited bore weapons can be issued. 3. If the answer to the above is in the affirmative, the applicable law and procedure and the person who can issue exemptions oblique licenses. 4. The number of licenses, including permits,
permits issued with regard to SMGs and other prohibited bore weapons. 5. The approximate number of SMGs and other prohibited bore weapons in private use in the country. 6. Whether exempting certain categories of persons or granting them the right to obtain licenses for SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 25 of the Constitution, which mandates that all citizens are equal before the law. 7. Whether enabling the easy availability of SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 9, the fundamental right to life guaranteed by the Constitution. Next paragraph. 6. Now this is the important part. Yes. The office is directed to make a separate file and title it Submachine Guns and Other Prohibited Bore Weapons and register it as a Constitution petition under Article 184(3) of the Constitution with regard to paragraph 4 onwards. The matter prima facie is one of public importance with regard to the enforcement of fundamental rights, including Articles 9 and 25 of the Constitution. Therefore, it be placed for consideration of the committee constituted under Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. Now, but stop here. So yesterday's order, we had very aware that we are dealing with the case of the 2021 SMC4, SMC5 and CP27, and incidentally this matter came up about the Press Association of Pakistan. So we asked you and you gave an undertaking on behalf of the federal government, which you are at liberty to do so, but it doesn't mean that the Supreme Court Practice and Procedure Act, which has just been upheld not very long ago, should not be complied with. This order that you read is 17th of January. That's right. And we were expecting something to come, some application and something. Despite that, we had made it clear that personal criticism of judgments is no issue, but we would want to attend to it in a serious manner. I mean, not somebody comes and throws one paper, somebody comes and says something. I mean, I don't know, sort of, I was duped into signing this petition. I don't know what's all these statements being made. I mean, if you file something, if you want to withdraw it, there's a procedure, you file something else. So, Shahzad Sokar Sahab, aap zara bataएं, because we consider this matter serious, but we cannot pass order till it goes through the committee first. That was the understanding yesterday, that they will file a separate application. You know, we were expecting it. I mean, if someone doesn't want to, we can't force someone to do so. साहब से कहा भी था कि कुछ चीजें रिकॉर्ड पे, कुछ सीएमए, कोई चीज आप फाइल कोई कह रहा है जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, जीआईटी बन गई है, भाई हमें शक्ल तो दिखा देना कोई कागज के टुकड़े की। जीआईटी बन गया, you should know. I mean, नहीं, हम नहीं चीजें देखते हैं भाई, हम जो हमारे सामने आता है, ये पहले चीजें होती गई थी, हमें एतराफ करने में कोई बात नहीं, मगर उस वक्त तक इन चीजों का तरीकेकार नहीं तयन हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, चीफ जस्टिस ले सकते हैं, कौन ले सकता है। अब तो कानून ने तयन कर दिया है ना, और वो कानून हमने कहा सही है। अब ठीक है, बात अहम बात है, हम ले लें, हमें बता दीजिए, कमेटी के पास चला जाएगा, आ जाएगा, मगर अगर सीरियसली इसको लेना चाह रहे हैं, अगर एक कोई कागज उधर से दे रहा है, उधर से दे रहा है, हम आगे बढ़ें कैसे? हम आई डोंट नो कैसे बढ़े। हम सुओ मोटो लेंगे, फिर आप ही हम पे एतराज करेंगे कि जी आप ही अपना जो कानून आपने अपहोल्ड किया उसी को आप वायलेट कर रहे हो। तो ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल। अब जरा हम कानून पे चलना चाहते हैं। जीआईटी का कोई नोटिफिकेशन भी इशू हुआ होगा, अभी हमें क्या पता, हमें कोई किधर से पता होगा? वो कल को अटॉर्नी जनरल हम पे एतराज कर देंगे, जी आपको क्या पता, टुकड़ा तो लिया है सामने। जीआईटी का नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि इन विच लॉ द जीआईटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सवाल से सवाल उठेंगे भाई, अब एटीसी के लॉ में तो है। आपको याद है भाई जी, मुझ पे बड़ा भाई, हम केस जो हमारे सामने, हम उस पे तो हमने ऑर्डर कर दिए, हमने डायरेक्शन भी दे दिए, बाकी चीजों की चलें की बात का नोट भी कर लिया। अटॉर्नी जनरल गिवन अंडरटेकिंग, वो तो उनके हाथ तक है, मगर अब हुक्म हम कैसे करें इस बात पे, मजीद कैसे चलाएं?